this great state, that I spent a formative period of my life as a young graduate from Oxford University, living and working as a teacher amongst your countrymen. And that is an experience that continues to influence me today. And yesterday I travelled to Bakshi Katalar. Do any of you know Bakshi Katalar? Maybe some of you know. And there I went and had an emotional reunion with some of the people who had provided such an influence on me as a young man. And it was an emotional experience because I formed a strong attachment to this extraordinary country, and in particular the remarkable state of Uttar Pradesh. From the holy city of Varanasi to the wonder of Agra, I knew then, ladies and gentlemen, that India was destined for an extraordinary future. In the intervening 2 decades, India has indeed become great, but in truth, India is only just getting started. As well as successfully holding the presidency of the G20, India's growing economy is accelerating past others and is already bigger than my own country's. That trend will only continue. We don't just acknowledge that, we admire it and we celebrate it. And we want to be at your side as partners as you go forward on that exciting journey. Because I come here today to UP as a representative of a new kind of British government. The torch has passed to a new generation of British ministers, led by my friend and colleague, Prime Minister Rishi Sunak. He has already established, thank you, and he has already established an excellent relationship with Modi ji. This is a generation of British ministers that has studied and come of age in one of the most diverse countries on earth, a country of pluralism, of tolerance, a country where I can tell you that this minister's children celebrate Diwali with the same enthusiasm as they do for Christmas. And to the point that was just made a few moments ago, a country where global Britain is not just a political slogan, it is a fundamental part of who we are as a nation. And I say this as well, in my country as well as your country, it doesn't matter where you're from, it's where you're going that counts. And when I come back to Lucknow, I see what has already been achieved and I am amazed. This is a country full of promise about what tomorrow will bring. And indeed, we meet here in one of the fastest growing parts of India, a state of over 200 million people. Honourable Chief Minister, I think you said 240 million people, a hub of research and development, a state that is hungry for its future, just as Britain is. And we know your ambitions, Honourable Chief Minister. We know your ambitions for this state, for growing the economy this decade, for developing the infrastructure, for establishing a defence corridor, the 6 nodes, the engine of New India's growth. This is hugely promising. Let our UK-UP comprehensive strategic partnership be the engines of each other's growth. And to demonstrate that ambition and commitment, I am joined today by more than 30 British businesses, firms that are already partnering with their Indian counterparts and are ready to deepen and intensify that relationship. Today they are signing 7 MOUs, committing £165 million of investment into UP and generating almost 1,000 jobs. And when it comes to economic development in India, business is not beginning from a standing start. Since the turn of the century, no G20 country has invested more in India than Britain. For its part, India is Britain's 2nd biggest jobs creator. And in defence, I'm the Minister of Defence, we see with growing clarity where our relationship can go. On land, on sea, in the air, and even in space and cyber. At sea, the crew of HMS Tamar visited the Andaman and Nicobar Islands last month and exercised with the Indian Navy. Our flagship, the great carrier, HMS Queen Elizabeth, sailed to the Indian Ocean in 2021 and took part in our most demanding bilateral exercise to date, Exercise Konkan Shakti, conducted by all 3 services of each country. In the air, you'll be aware of our regular joint exercise, Indra Dhanush, with tactics, techniques and procedures being shared between our aviators.
and on the ground, British participation in exercise Ajay Warrior that has strengthened our interoperability and shared skills, allowing us to tackle terrorism and boost counter-insurgency capability. And that's before, ladies and gentlemen, before you even think about the extensive collaboration at the civilian-industrial level, whether it's our new Defence Joint Industry Working Group launched last week, or the Enhanced Cybersecurity Partnership, or the collaborations on space technology. And I see also huge opportunities for our industries to collaborate in electric propulsion technology to power the Indian Navy and complex weapons systems to keep both our countries safe. And tomorrow, ladies and gentlemen, I look forward to emphasising to Indian defence colleagues that the UK stands ready to commit to something truly historic. The largest ever transfer of jet engine technology from Britain to any other nation in our history. Technology that will give India sovereign, make in India intellectual capability that will ensure India becomes one of just 6 countries in the world to own this cutting-edge capability. And let me be clear, ladies and gentlemen, that will empower this great country to export future fighters on India's terms, in India's interests around the world. No export conditions, no strings attached, sovereign Indian capability. Because you know what, ladies and gentlemen, a sovereign, self-reliant, resilient India with a sovereign defence jet engine industry to match is not just good for India, is not just good for the region, it is vital for the world. And that's because wherever you are on our planet, there is a growing, inescapable feeling that the world is becoming more dangerous. And I know this audience and this Honourable Chief Minister doesn't need to be reminded that China's increasing belligerence poses systematic challenges to the international rules-based order. We all need this defence. And so accelerating our partnership in defence and civilian sectors is not just a nice to have, it is a geopolitical necessity. And we stand ready to get on with it. Prime Minister Rishi Sunak recognises that, and he fired the starting gun on the latest sprint last week when he joined a meeting between India's National Security Advisor, Ajit Doval, and his British counterpart, Tim Barrow. Together they framed plans to strengthen cooperation on trade, technology and defence, and I know that Alan Gemel, the Trade Commissioner, will be speaking about that in a few moments. And we also have the Foreign Secretary, the Chancellor of the Exchequer and the First Sea Lord, all travelling here in due course to further strengthen our relationship. And so as I bring my remarks to a close, let me say this, Honourable Chief Minister. As I said to you, 24 years ago, my pupils taught me some words in Hindi. They taught me, Paradesi, Paradesi, Jana Nahi, Mujhe Chori Ke. They taught me this. They taught me this. But today, the Hindi slogan that comes to my mind is UK, UP, Sabka Sat, Sabka Vikas. Thank you. यूपी और यूके साथ है ना, बहुत ही खूबसूरत है। और एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म यूके और इंडिया के पार्टनरशिप के बारे में खास फिल्म हम लोग बताएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी टीम से कि ये वीडियो प्ले करें। आप स्क्रीन की ओर ऐसे देखिए। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में जो खास पार्टनरशिप हो रही है और खास एमओयूज साइन होने वाले हैं और एक खास एक फिल्म आपके सामने आप देख सकते हैं छोटी सी वीडियो के रूप में। आप देख सकते हैं इनमें एलेक्स जी हैं बीच में एंड यू विथ फ्यू पीपल फ्रॉम The Indian subcontinent houses the world's second largest defense forces in the world, constantly evolving and redefining itself to maintain peace.
law and order. बुंदेलखंड के विकास को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए अब ये तय किया गया है कि यूपी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विस्तार आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट तक पूरा भेद होगा. Innovating its capabilities of modern warfare, deterrence and defense tactics. Introducing the Uttar Pradesh Defense Industrial Corridor, announced by the Government of India in February 2018 at UP Investors Summit. It is an oasis for cutting-edge hub for the military and home-age security, worth rupees 20,000 crore to be deployed in the state of Uttar Pradesh to enable a technological revolution spanning the heart of UP. Supported by the landscape, strict governance and skilled human resources to expand an innovation and manufacturing initiative. Over 3,000 hectares of land between 6 strategically planned nodes for maximum mobility, management and impact, made possible due to the high-end infrastructure strategically located along the Golden Quadrilateral, along with connectivity with national and international airports. Largest railway network in India, spanning over 8,949 kilometers. Western dedicated freight corridor that stretches from Dadri in Ghaziabad to Jawaharlal Nehru Port at Mumbai. And 57% of the eastern dedicated freight corridor, which connects western region to the eastern part of the country. With policies providing 100% reimbursement of patent fees for domestic patent registration, 50% reimbursement of the patent fee for international patent registration, capital subsidy of 7% up to INR 500 crore in Aligarh, Agra, Lucknow and Kanpur nodes of UPDIC, capital subsidy of 10% up to INR 500 crore to invest in Jhansi and Chitrakoot, reimbursement for setting up an effluent treatment plant, that is ETP, by the DNA units, financial assistance to MSME units for obtaining quality certification, along with additional benefits like transport subsidy for anchor units, transfer of technology related incentives, land subsidy for 25% for anchor DNA units setting up in UPDIC. Further progresses by UPDIC with 140 plus signed MOUs with Bharat Dynamics Limited, BrahMos Aerospace, Adani Defence and Aerospace and many more. Apart from being another jewel in the transforming future of UP, the next generation UPDIC also promises to transform cyber security, zero latency communication and connectivity, real-time crisis management, 360-degree research and development, with enormous scope to fuel technological progress of state and nation, opening investing opportunities in technological parks, arms and ammunition manufacturing, drones and aircrafts development, testing and research facilities, maintenances, repairs and overhaul centers, with upcoming industries in small arms and metal works at Aligarh, electronics and non-polluting industries at Agra, aerospace hub and aero engine cluster in Lucknow, special clothing, bulletproof jackets, ammunition, components and parachutes in Kanpur, turning the cultural heartland of the nation into the strategical center for state-of-the-art maritime and military innovations, inviting investors from all around the world to onboard the new India's growth engine that will take the country to a new global supremacy while boosting the economical and technological progress of the resilient state of Uttar Pradesh. Uttar Pradesh, New India's growth engine. जी हाँ, प्रिय सज्जनों,
वे जो पानी से नहाते हैं वो कपड़े बदलते हैं, और जो पसीने और परिश्रम से नहाते हैं वो अपनी तकदीर और दूसरों की तकदीर बदलते हैं। और यहाँ पे 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की बात हो रही है। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नए भारत के नए ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश के मुखिया यशस्वी कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज के इस कार्यक्रम में यूके के ऑनरेबल मिनिस्टर डिफेंस प्रोक्योरमेंट मिस्टर एलेक्स KCMP का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। इस अवसर पर यूके के ट्रेड कमिश्नर, प्रेसिडेंट इंडिया पार्टनरशिप फोरम श्री मोहन कौल, डायरेक्टर ट्रेनवुड लॉ प्रैक्टिस यूके से हरजोत सिंह, डिप्टी डायरेक्टर यूके डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपोर्ट्स श्री फ्रैंक क्लिकफोर्ड, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्रुप के CEO श्री रिचर्ड मैकलम का मैं इस अवसर पर भी मैं उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी और उपस्थित डेलीगेशन से जुड़े हुए सभी अन्य महानुभाव, डिफेंस प्रोक्योरमेंट से जुड़े हुए इंडिया यूके पार्टनरशिप ग्रुप से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज के सत्र में मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं यूके गवर्नमेंट का, जिन्होंने इस समिट के लिए एक पार्टनर कंट्री के रूप में अपनी सहभागिता निभाई और यूपी GIS 2023 को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। हम सब जानते हैं कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री समूह दुनिया के 16 देशों में जाकर के रोड शोज का आयोजन किए थे। देश के अंदर भी 10 बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोड शोज के आयोजन हुए थे और प्रदेश भर के भी सभी 75 जनपदों में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर हमारे जो MP MLAs थे, इन सब ने भी उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के उत्तर प्रदेश की असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने में अपनी मदद दी थी। और मुझे प्रसन्नता है कि यूपी GIS 2023 अपनी सफलता की एक नई कहानी के साथ आगे बढ़ रहा है। मित्रों, यह समिट हमारे लिए अपने सहयोगी जो पार्टनर्स थे GIS 2023 के, इन सब के सहयोग से आगे बढ़ाने में मददगार रही है। और आज जब हम यहां पर यूनाइटेड किंगडम जो हमारा पार्टनर कंट्री है उनसे जुड़े हुए इस सत्र में यहां शामिल हुए हैं, जो मुझे बताते हुए यानी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मुझे
बोलने में कोई संकोच नहीं कि भारत और यूके के संबंध एक सुदृढ़ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन संबंधों को, द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और आज इसका परिणाम है कि आज यूके से जुड़े हुए तमाम निवेशक न केवल जैश 2023 में भागीदार बन रहे हैं, बल्कि स्वयं यूके के डिफेंस प्रोक्योरमेंट मिनिस्टर अपने भारी भरकम डेलीगेशन के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के 6 नोड बनाने के जिस कार्यक्रम की घोषणा की थी, उस दृष्टि से आज का यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी साबित हो सकता है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रही है। उत्तर प्रदेश 96 लाख एमएसएमई यूनिट के साथ औद्योगिक निवेश की आधारभूत शर्तों को पूरा करता है, जो यहां परंपरागत तरीके से सैकड़ों वर्षों से जो से विरासत में प्राप्त हुआ है, उन परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अपनी परंपरागत उद्यम को बढ़ावा दिया है, जिसका परिणाम है कि हर एक जनपद के पास अपना एक यूनिक प्रोडक्ट है और 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए उनके नए रोजगार और उन्हें उस एमएसएमई यूनिट के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को और स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी मदद करते हैं। भारत अगर देश दुनिया के अंदर सबसे अधिक यूथ वाला देश है, तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश इन संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 11% भूमि के साथ हम 20% खाद्यान्न उत्पादन करके देश के अंदर खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है। सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास है और उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश के लिए देश के अंदर सबसे अच्छा गंतव्य इसलिए भी बनने जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास अपना एक अच्छा लैंड बैंक भी है, जिसके माध्यम से हम प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश से जुड़े हुए उन सभी 25 सेक्टर्स में निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को एक नई उड़ान देते हैं। ये जो 25 सेक्टर है, इसमें डिफेंस एंड एरोस्पेस भी है, जिसको तेजी के साथ विकास के पथ पर हम भारत सरकार के साथ मिलकर के जहां आगे बढ़ा रहे हैं, वहां राज्य सरकार की भी अपनी डिफेंस एंड एरोस्पेस की अपनी एक नीति है, जिसके अंतर्गत उन संभावनाओं को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निवेश और रोजगार से जुड़ी हुई नीति, यह अपने आप में एक विकल्प आधारित नीति है, जो उसमें तमाम प्रकार निवेशक को तमाम प्रकार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद देती है। और इसलिए इन 25 सेक्टर्स से जुड़ी हुई इन सभी नीतियों के माध्यम से हर एक निवेशक को
उत्तर प्रदेश के अंदर एक सुरक्षित निवेश करने की गारंटी देने और निवेश के माध्यम से न केवल निवेशक के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए उसे हम फलदायी बनाने में भी आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यूके ने पार्टनर कंट्री के रूप में GIS 2023 में जो अपना योगदान जिस रूप में दिया है और यूके के डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मिनिस्टर ने जिस रूप में इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना सकारात्मक एक सहयोग इस पूरे कार्यक्रम के साथ जोड़ करके देखा है, उनका एक पूरा डेलीगेशन उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को जो केवल डिफेंस एंड एरोस्पेस के ही क्षेत्र में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में, उत्तर प्रदेश के अंदर उन सभी सेक्टर्स में जो उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की टीम ने मिलकर के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया, उन सभी फील्ड में हम लोग इसको और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में राज्य सरकार का पूरा सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा। मैं पूरी डेलीगेशन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला हर निवेश न केवल सुरक्षित होगा बल्कि निवेशक के लिए भी फलदायी बनाने में राज्य सरकार अपनी पॉलिसी के अंतर्गत भरपूर मदद करेगी। मैं एक बार फिर से यहां पर यूके के माननीय डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मिनिस्टर और उनके पूरी डेलीगेशन का उत्तर प्रदेश शासन की ओर से GIS 2023 में हृदय से स्वागत करता हूं और यूके गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पार्टनर कंट्री के रूप में उत्तर प्रदेश के अनुरोध को स्वीकार करते हुए इसमें अपनी सहभागिता की और GIS 2023 को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान किया है। आप सबके प्रति आप सभी इस आयोजन के साथ सहभागी बने हैं, उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाए हैं। मैं इसके लिए आप सबके प्रति भी हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए और मैं विनती करूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी को कि वे एक प्रतीक हमारे चिन्ह जी को मिनिस्टर प्रोक्योरमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट जरूर तालियां हो जाए। एक नई फ्रेंडशिप की ओर बढ़ रहे हैं, एक नए भारत की ओर, एक नए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ हमारा राज्य नजर आ रहा है और ये खास फ्रेंडशिप लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ व्यस्त कार्य होने की वजह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी प्रस्थान करेंगे और ओके सो बिफोर दैट हमारे मुख्यमंत्री जाए उससे पहले MOUs चलिए आइए तो MOUs काफी सारे MOUs साइन हो रहे हैं और वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर इट। सो हमारे आज यूके से 6 कंपनीज के साथ MOU सिग्नेचर हो रहे हैं आज और माननीय मुख्यमंत्री जी इस समक्ष ही ये MOU साइन है, तो पहले जोरदार तालियां हो जाए। और हैं हमारी यूके कंपनीज जो है यू हेल्थ, प्रोमेक Temend Applied Sciences Limited, Molecular Quest Healthcare Limited, Vapure Training Academy and Netheus Limited। तो पहले मैं विनती करूंगी यू हेल्थ exchange the MOUs and let's have the MOUs exchange
जोरदार तालियां हो जाए हमारे उत्तर प्रदेश जो एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है और ये एक प्रतीक है यू हेल्थ प्रोमेक Tamarind Applied Sciences Limited, Molecular Quest Healthcare Limited, Vapure Training Academy और Netilis Limited. ये 6 कंपनीज के एमओयू सेक्शन जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगी मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से हम लोग